और अंग गण्यमान्य अतिथियों का खड़े होकर करतल ध्वनि से स्वागत करें। धन्यवाद। I request Dr. Anil Prakash Joshi, Dr. G. Mahantesh, Mr. Shombi Shah, the UN Resident Coordinator, to kindly grace the dais. With the permission of Honorable Chief Guest for today's function, sir, may I start? Gajananam Bhutgaladi Sevitam Kapit Jambu Falacharu Bhakshanam Umasutam Shok Vinashkarakam Namami Vigneshwar Padapankajam Himachadit Uttung Nagadhiraj Himalaya Kalkal Ninad Karti Charachar Dhara Ma Ganga Jamuna Saraswati सृष्टि के समस्त देवी देवताओं की करण भूमि देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी में स्थित मां सरस्वती के आशीर्वाद से अभिसिंचित पुष्पित व पल्लवित विद्या के इस पावन प्रांगण में आज 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के इस उद्घाटन सत्र के शुभ अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे मध्य राज्य के तेदीप्यमान मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्करसिंघधामी जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आज की सभा के मुख्य अतिथि हैं, अन्य गणमान्य अतिथिगण से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस उद्घाटन सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके करें।
घटन्यो तुम्हें काजे सो संघट शब्द सुनाए, संघट शब्द सुनाए। सुहागिनियो तुम्हें काजे सो सुहागिनियो तुम्हें काजे सो सुहागिन मंगल गाए, सुहागिन मंगल गाए। आज बधाई मेरे न्योती, पांच बधाई मेरे न्योती, पांच बधाई मेरे न्योती। बहनिया न्यो तुम्हें काजे सो बहनिया रोचन लाए, बांधव न्यो तुम्हें काजे सो बांधव सोब बढ़ाए, बांधव सोब बढ़ाए। आज बधाई मेरे न्योती है, पांच बधाई मेरे न्योती है। समायो बधायो मेरे न्योती। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय, तमाम हमारे उत्तराखंड सरकार से जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको प्रणाम करती हूँ। और उन जो फंसे हुए हमारे उत्तरकाशी में हैं उनके सुख शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और बाहर से आए हुए जो मेहमान हैं देवभूमि में अपने कलाकारों की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद। धन्यवाद माननीय बसंती देवी जी, पद्मश्री। उत्तराखंड का गौरव हैं आप, हमें आप पर गर्व है। देवियों सज्जनों, परंपरागत रूप में अब हम अपने अतिथियों का पारंपरिक स्वागत पुष्पगुच्छ और उत्तराखंडी टोपी से करना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं अपने वॉलंटियर्स को भी कृपया इस कार्यक्रम में। इसको ऑन ऑफ करना है, इधर से मूव करना है। अभी तो है इसमें, अभी तो 3 मिनट ही हुआ है। क्या? अरे नहीं, छोटे छोटे लो, तो सिखा दो, चलता नहीं। यह हमारे राज्य का स्वागत प्रतीक उत्तराखंडी टोपी और पुष्पगुच्छ। Thank you so much, sir.
We are honored to have you all here amongst us on this auspicious occasion of the inaugural ceremony of 6th World Congress on Disaster Management. Now, I would like to invite Dr. Ranjit Sinha, Secretary UCDMA and Secretary to the Government of Uttarakhand, to deliver his welcome address. Good morning, everyone. I extend, on behalf of State Government of Uttarakhand, a very warm welcome to our chief guest today, the Honorable Chief Minister, Sri Pushkarsinghdhami ji, Admiral D.K. Joshi, Lieutenant Governor Governor Andaman and Nicobar, Dr. S.S. Singh, Chief Secretary Uttarakhand, Srimati Radha Rathore, Additional Chief Secretary Uttarakhand, Dr. Sombi Shah, International, Padam Bhushan, Dr. Anil Prakash Joshi, Dr. Durgesh Khan, DG Post, Dr. Kamal Hansana, Chairman Graphic Era Group of Institutions, Dr. Anand Babu, Convener WCDM, and everyone present here. It's really an honor to welcome such great dignitaries to this much awaited 6th WCDM, which has its own homeostatic, stabilizing, protective, and healing mechanism. Any derangement happens inside the earth or in the atmosphere, manifestation can be visible on the surface of the earth, which can take the shape of disaster, impact of which can be felt far and wide. That is why we need collaboration and concerted effort in disaster mitigation. The word disaster derived from a French word, disaster, which means bad star or bad luck. But now it has become a threat to the pace of growth and development of our whole civilization. It may occur due to natural events, but many a times it is mainly due to extreme man-nature interactions. Without proper knowledge and understanding of the structure and behavior of Earth and its landscape. This knowledge about Earth and its behavior, would help us find sustainable approach to development, prevent natural events turning into disaster, adopt suitable technology and practice for early warning and alert system, mitigation and management of disasters, and ultimately formulate an administrative, financial and legal framework for new developmental paradigm. The incorporation of traditional knowledge system and indigenous materials in our development paradigm would also benefit us all in our endeavor to achieve sustainability.
Our state, Devbhoomi Uttarakhand, which sits in the lap of great Himalayas, had taken a great leap forward on the path of inclusive development, with great expectations under the leadership of our young and dynamic Chief Minister. At the same time, we all know the Himalayan ranges are one of the youngest and highest mountain ranges, which are still rising and reforming, and therefore prone to all possible natural events and derangements, which we see happening actively and frequently. It has the potential to negate the years of developmental efforts in a flash. We have faced challenges like 2013 Kedarnath disaster, learned lessons, brought changes, adopted new technologies, and presented a new model of reconstruction and recovery. But there is a constant restlessness to get better every day in this endeavor. Today we have come together for the pursuit of greater purpose, and I am sure that the purpose will be served successfully. I wish all of us a very productive and successful conference with exciting and encouraging discussions, an exchange of knowledge and ideas so that together we can achieve the greater purpose for humanity to keep progressing unhindered while finding solutions that suit a particular region, that is, local understanding with global approach. The ultimate objective is to create safe and resilient Uttarakhand for investment-friendly and prosperous Uttarakhand. Thank you all for joining us and being a part of this Congress at Devbhoomi. I sincerely wish that our experience here is a productive and rewarding one. Thank you once again. Jai Hind. Thank you, sir. May I now invite Dr. Anand Babu, the convener of WCDM, for his brief address. Respected Sri Pushkarsinghdhami ji, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, respected Admiral D.K. Joshi ji, Honorable Lieutenant Governor Andaman Nicobar, respected Chief Secretary Dr. S.S. Sandhu sir, and Srimati Radha Raturi, ACS Uttarakhand, Mr. Shobi Sharp, UNDP Resident Coordinator, Dr. Mahentesh, Dr. Ganshala, President Graphikara University, Dr. Anil Prakash Joshi ji, Padma Shri, and Professor Durgesh Panji, Sri Rajendra Ratna ji, Dr. Ranjit Kumar Sinha ji, internationally almost 70 कंट्रीज से आज यहाँ पार्टिसिपेट किया। आप सब लोग को धन्यवाद, नमस्कार। At the outset, I wish to extend a very cordial welcome to every one of you to the 6th World Congress on Disaster Management. From the first WCDM to 6th WCDM, we have made a steady progress in all aspects. Today, I want to place on record that we have broken our own records in terms of research papers, delegates, international participations, more than 70 countries. This time, number of countries also increased. More than 200 international scientists, experts, practitioners participated in this world event. I am gratefully indebted to the government of Uttarakhand, especially to Sri Pushkarsinghdhami ji, our Honorable Chief Minister of Uttarakhand, for accepting to host this global event in the beautiful city of Dehradun. Why Uttarakhand? Why Dehradun as the venue for the 6th WCDM? We have the ambition to bring you all one of the most breathtaking places on earth, namely Himalayas. The Himalayas also provide us the context to understand the multiple vulnerabilities and our response towards strengthening climate action and disaster resilience. As you may have already recognized, WCDM is one of the largest platform on disaster management outside UN system, bringing together scientists, policymakers, practitioners, as well as diverse stakeholders. Once again, I thank
Honorable Chief Minister, for hosting this global event in Dehradun. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Dr. Durgesh Pant, Director General, UCOST, to present a brief, detailed and contextual presentation of this event. Sir. Good morning and namaskar to you all. परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम हुआ है और इतने 50 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आपका बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरी वर्ल्ड फ्रेटर्निटी की ओर से कि आपने उत्तराखंड और देहरादून में ये मौका दिया। माननीय राज्यपाल महोदय, सीएस साहब, सभी जितने हमारे मंचासीन अतिथि हैं और all those delegates, those who have come from across the world, and I know they are representing all the continents. In fact, we have more than 51 countries have been represented, so it is a huge occasion. I'll straight away come to the concept behind this entire event. See, the whole idea, as we know, that this globe has been represented out here with 51 countries. So there we are. And since India is going to hand over its presidency 2-3 days from now on 30th November to Brazil, and Brazil's representation is also here. So we welcome all the participants and from all the continents of the world. And what a coincidence is this, and convergence of all global initiatives. What is happening on 30th of June, this presidency that India had so successfully, so beautifully, Prime Minister Saab led it from the front, and we have contingent from Africa, and this time round G20 was so beautifully, somehow also African continent is also part of it. So huge round of applause for the presidency that our Honorable Prime Minister Sir has provided. So G20, and G20 talks in terms of working group on DRR. So that is again a milestone. So this disaster risk reduction happens to be again a milestone. So again it is part of it. And what a coincidence again, Sendai framework that happens to be again the cornerstone of this entire DRR. It is at a midway, almost at a midway. बीच में है 15 से लेके 2030 में जो देना है उसका midway है. And similarly with regard to SDGs. So it's a very, very, very important inflection point where we are deliberating, and this 4-day event is going to set the agenda for many other such things. And how very interesting, COP is interesting. 3-4 days from now, on 30th November again, we are going to have our COP 28 at Dubai, Middle East. So we have again representation from the Middle East. So therefore, DRR and this conference, this WCDM, this provides an ideal platform for all these global events. And how very beautiful, CM Sahab, he thought about, in fact, he runs a dialogue series in which he interacts with thousands of people across. It is Bodhisattva. And in its first dialogue series, he talked about disasters in this migration. And when? It was 2 years back. That he did. So deserves at that one, that happened 2 years back. And that set the agenda. In fact, that led to the organization of this WCDM. So, and the objective of this, as has been elaborated, is extremely clear: climate action and disaster resilience. So since we will be deliberating for all these 4 days, and since we happen to have more than 60 important plenary special feature, Mahantesh Bhai is here again from inclusive point of view. So it is all going to be part of this entire one, and how disaster management is so very important with regard to mountain ecosystem for communities and what we are witnessing. In fact, CM Saab is just coming back
In fact, he was there at Silkyara, and we are all praying and with folded hands, because all our standard friends, they will come out safely. And this is going to be a triumph moment for the entire world, because the whole world is there helping out. What better example can we set than Silkyara? So it is there, and he has led from the front, the Chief Minister all by himself, and the Prime Minister is himself supervising everything. So there it is. And this idea has been unfolded into a campaign, this Bodhisattva, and therefore all these days we have pre-events across the country. In fact, from IIT Mumbai, we have people, we have this in Delhi, we had Lucknow University, the alma mater of Honorable Chief Minister. From Northeast, the Vice Chancellor is here, Professor Rajiv Mohan. So we had all these pre-conferences across the country. And in Uttarakhand also, in all institutions, schools. So it was a kind of a disaster preparedness, this entire campaign. This is the inclusive structure for the WCDM, all these plenary sessions. So we will all come across this one. And the most important thing is, because for millennia altogether, this Bharti Manisha talks about Ano Bhadrakrito Yantu Vishwatah. Let the noble thoughts come from everyone, from all around, from all directions. And what better platform than this? So at the end of it, we will come up with the Dehradun Declaration, and that will pave the way for many other SDRR initiatives. So that's the whole intent, and input from luminaries, experts, with folded hands, I request, because you have graced this wonderful place. So there we will be. And since the ethos of this system is Mata Bhumi Putroham Pritibhyah, earth is my mother and I am her child. So this combination, this symphony, how we can maintain through climate action, and so all that we will be deliberating. So, and for us in India, the earth is sacred and the Himalayas are sacred. Our concern for ecology, our home is, and our reverence to our mother, the earth. And the Dehradun Declaration will be part of it. Can I request for the small video to be played? And Prime Minister Sahab, he has also sent his message. Yesterday we have received this, so there he is with his blessings, and there he is. He has expressed his concern for not only for this conference, but for the entire ecology and how the entire world can take forward the masses from India, from this WCDM. So there it is. Can we play the film if it is there? अस्तुत्तरस्यां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम लगाते राजः पूर्वापरो तोयनिधि विग्रहां स्थितः पृथ्वीत्या इव मानदण्डः अनंत काल से पृथ्वी की गरिमा बढ़ाती ये हिमालय पर्वत श्रृंखला और इसके गर्भ में बसी देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित हो रही 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरे भारत में आयोजित हुए प्री इवेंट्स एवं कॉन्फ्रेंस और देश भर की यूनिवर्सिटीज एवं प्रदेश भर के विद्यालयों ने अपनी भागीदारी देकर उद्घोषणा की 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलने वाले आपदा प्रबंधन के महापर्व की एक ऐसा मंच जहां 50 से ज्यादा देशों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ एकत्रित हुए हैं, जो 4 दिवसीय सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले 60 से अधिक सेशंस में आपदा प्रबंधन के नए तरीकों पर बात करेंगे और समस्याओं का हल निकालेंगे। गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण व विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और उत्तराखंड के युवा दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। Thank you so very much. Thank you.
Thank you so very much, sir. Ladies and gentlemen, so we start this wonderfully organized 6th World Congress on Disaster Management with the message, "Saath ladenge aur saath jeetenge." Thank you so much, sir, for this insight. Ladies and gentlemen, amongst us now we have an eminent personality, a person known for his contribution towards green earth, Padma Shri Padma Bhushan, Dr. Anil Prakash Joshi ji. He needs no introduction. He is a mammoth personality known for his concerns for green earth and environment. Sir, मैं आपको उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ. A warm welcome to the delegates, those who coming from the different part of the world. This is a very important Congress, in my opinion, as I represent community of this state, and we are working across the country with the people. And I would like to focus 2-3 important issues which I think the Congress must seriously contemplate and think of. Biggest challenge that we have now is that the countryside development across the globe is the priority of political people, socially also, by all standard. If we are becoming city smart to smarter, but the countryside are still lagging behind, that's one challenge. Another very important challenge, rising disasters, one after the other, and unfortunately, the heat waves, the warming of the globe have been taking, and the steps that we take one ahead, 10 we are pushed back by the disasters. That's unfortunate part of it. And this is one reason which we really need to think. We need disaster-free development strategy. We cannot deny development at all. Because why? Because those who have not been the cause of the disaster that we have know that the way we have done the global warming, the rural people of the world have not contributed towards. Their share of development is still awaited. And therefore, at the same time, the global warming, as I said, will also end up one after the other kind of the disasters. You know, we have recently been facing the several one, and this state also. But the state that you are now, unfortunately, have been in the disaster around here for one or other reason. And you will also agree that we were the one who faced fire, another very important disaster, and that we said that why not the fire should also be taken as part of a disaster. And to us, it has to be redefined disaster, because anything which go beyond the control is a disaster to all of us. Now take the example, current one, the tunnel one, which Dr. Durgesh pointed out. Now the tunnel, right from Chief Minister to Prime Minister, and I know Mr. Chief Minister currently must also be stuck in the tunnel only. He must have been his mind there only. But the issue is how helpless we are. We cannot deny development. We need, and I believe that the tunnels are better than the roads that we have been building. But what happens, that's all before you. The issue is, it's not the case of this part of the country. Across the globe, disasters will keep on coming, repeating all time. Therefore, I think we need to have something in considerations. You see, you will have to agree who are more victim in the disaster, resource-rich zone and the rural community of the world. If you look into the data that we have, the 90% after 1990, whatever disaster hit us, it was the rural community and developing world, 90% were the sufferer. So that does mean those who have not been part of development that we had are suffering. Our share of development is still weighted, and therefore a disaster-free development should be the basic thought we have to work with. And also I believe what we needed, in fact, we aren't too big equipped with. See, whole country attention was there, media was there, but we were helpless. I know the Chief Minister could not sleep. I know personally about it.
And his whole mind and whole attention was there in that tunnel. And not only he, most of the bureaucrats, most of the officials were there in the tunnel. And what it is, it may happen anywhere in the world. Therefore, this lesson add a chapter to the disaster whenever think on working on that anything of such can come, and then issue comes whether we are equipped, we are well equipped with. One hand, we have a challenge of development that we cannot deny. We need development. We wanting the development all time. That's why we had a statehood. We were demanding, and you cannot stop people in the countryside, rural part that we do not need. And second important, resource-rich zones are more affected, whether it is the mountain or the ocean. You know, because you are a scientist, you have many research papers are coming up, and you are proud of that too. But the fact is, the community around those resource-rich zones are more affected than it. Urban can manage, but the rural cannot. Therefore, I think one thing which I believe really need to review the Congress, what happened in the last 5 years, and then what may happen tomorrow after seeing the 5-year disaster and the way the disasters are changing and one another things are coming on our head. Second important thing, especially in the climate change front, second important to us is a strategy, a mechanism that we really need to reach to the first victim of a disaster. And that doesn't happen, unfortunately. The relief comes later on, but the first victim, unfortunately, becomes the rural again, if you analyze it. That's another important, to my opinion. And equipping us, the tunnel is an example. That lesson, go to the Congress. And third and the last one, development and disaster should not be independently discussed. It has to be together. The disaster said to be sometime because of the development that has been a very popular voice, unfortunately. But to me, what you cannot stop others to do and enjoy what other their counterparts are enjoying. Therefore, disaster and development should be in one platform. Unless we do that, I don't think we will be able to bring any solution. And that is strongly, I again believe, the disaster-free development should be our slogan. And I thank Mr. Chief Minister, who has been by all time repeatedly saying ecology inclusive economy for the state, where we need ecology and economy both. But you know, he is also stuck when he is helpless and there is no technology and the support system, we become helpless. I think this helplessness is the one issue which we seriously think of. Thank you very much. Thank you, sir, for your brief address and conveying some of the major concerns for the state. Now I would like to invite Dr. G. Mahantesh, founder, Samarthanam International, Bangalore, for his address. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for him. Good morning, everybody. Honorable Chief Minister, sir, Honorable Lieutenant Governor ji, all the eminent distinguished guests on and off the dais, Dr. Durgesh Pant sir, Ganshal ji, Shambhi Shah ji, and all my distinguished people on the dais. First of all, I would like to congratulate the government and the organizers for organizing this wonderful event here, World Congress of Disaster Management, and making it inclusive, having someone like me with us, with you all, especially on the dais. That shows the concern of Honorable Chief Minister Sir, Durgesh Pantji, and all the organizers. Generally, disability doesn't find its place in development agenda. Even if it finds, it is lost. But here you see the genuine concern of the organizers. Durgesh sir, thank you very much for especially having me and my organization, Samarthanam Trust for the Disabled, as
Joshi sir mentioned, I've been hearing about Honorable Chief Minister sir personally leading from the front the supervision and monitoring and guiding what is happening in that tunnel. I think every state needs a progressive, genuinely concerned Chief Minister like you, sir. I'm very honored. Dear friends, an inclusive approach, I think very essential. As rightly said by the person who just now spoke, sir mentioned how people suffer for which they are not responsible. For all the man-made disaster, I think it's important that before we conceptualize any developmental initiative, we got to think about the ecology, the environment, and the people who live around. So Samarthanam Trust is a 27-year organization committed to empower persons with disability and non-disabled also, because we believe in inclusion. Because they're all part of they're all the integral part of the society. We all have to live together, and unless we ourselves empower the last person, most marginalized, are disabled. So the unwavering commitment of state governments like Uttarakhand and under the able leadership of our Honorable Prime Minister, India is really poised for overall development, supporting the last man. Divyang itself is such a great gift our Honorable Prime Minister has given in recognition of the positive qualities of persons with disability. So if opportunities are given for people with disability at the right time, disability automatically loses its first three letters. So if disability loses its first three letters, what remains? Ability. So dear friends, it's our responsibility to ensure that every person gets their due support system so that they overcome either their disability or challenges. And today we are talking about the disaster, DRR. So we have to get ourselves prepared to address any eventuality, both natural or man-made. So wars are happening, unfortunately. We are responsible. And disaster creates a lot of people with disability. How we all together can address, representative, the gentleman Shami Shah sir, who leads UN and represents UN in our country. UN is leading from the front. Samarthanam is also a ECOSOC member of United Nations. So Samarthanam would like to commit itself to join hands in whatever limited way to get sir. Now technology, where the man who has done so much on technology, assistive devices, technology devices, can make huge difference, which can help us to overcome our disability and become contributors. Right from the inception, Samarthanam believes in equal participation in every possible activities, programs, especially in case of disaster, because disaster doesn't spare anybody, it's merciless. In the recent COVID time, it was a disaster, worldwide disaster. None was spared. So Samarthanam decided to actively participate with governments. We spoke to a lot of corporate supporters, donors. They overwhelmingly supported us to contribute our little bit to the entire country. We could do a little bit of support to Jolly Grant Hospital near airport in Uttarakhand. We could just give away some PPE kits in the beginning days of COVID. So like that, Samarthanam loves to work across without any boundaries. So I've been discussing with Durgesh sir what are the various ways Samarthanam can share its expertise and also take learnings from Devbhoomi so that every disabled becomes capable contributors and taxpayers of the country. I'm sure you all know, with one conclusion I would like to finish. Samarthanam, through its Cricket Association for the Blind in India, manages cricket for the blind. Many times we had the privilege of hosting our cricket tournaments under the able leadership of Durgesh Pansar, and Uttarakhand government also has supported us. So we'll continue to seek your support and we'll continue to add little value whatever we can in your ambitious
DRR. Together, let's visualize, envisage, in advance, anticipate, because mountainous areas are more disaster prone. So I really appreciate the courage and the bravery of people who have demonstrated who live here. So with this note, I'll also be joined by my team. We'll be talking about more inclusive approach to disaster management in the panel in the evening. I request everybody to come. I also would like to acknowledge the presence of my team. Mr. Deshpande, he did a lot of work, especially in tsunami. Being himself totally blind, he did a lot of work in tsunami. And Shalinder, the Secretary of North Zone of Blind Cricket International. So once again, I would like to extend my sincere most gratitude to Professor Duresh Pansar, Dhanshal sir, and all the organizers, the government, Chief Secretary sir and Additional Chief Secretary, for having Samarthanam. And more than that, adding inclusion, adding disability as part of this WCDM. So my heartiest congratulations, and I wish this event a super success. I am sure a lot of recommendations will come which will act as a torch bearers for future disaster management. Thank you so much. Thank you, Mahantesh. Ladies and gentlemen, a man who walks the talk, a person who is facing challenges but then has overcome almost every bit of it. Huge round of applause for him. Now, we have Mr. Rajendra Ratnam, the Executive Director of NIDM. Ladies and gentlemen, we'll be having a lot of deliberations, discussions and wisdom insights from Mr. Ratnam in various technical sessions as well as the plenary. So I request you for your brief address in the inaugural. Thank you. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपराज्यपाल महोदय, UN Resident Commissioner Shri Sombi Sharp ji, Chief Secretary Sahab, Additional Chief Secretary, dignitaries on the dais of the dais and dear delegates. मुझे संकेत मिल गया है कि मैं कम बोलूं क्योंकि दूसरे सेशन में भी बोलना है. माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका सर्वप्रथम हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने न केवल देश को बल्कि दुनिया को आज उत्तराखंड की देवभूमि में इस बहुत ही विशेष विषय के ऊपर जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है उसके ऊपर इतना बड़ा आयोजन करने में एक लीडरशिप लिया है. उसके लिए मैं भारत सरकार और अपनी ओर से NIDM की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं. मैं दो ही बातें कहना चाहूंगा, एक NIDM के बारे में, दूसरी डिजास्टर के बारे में. भारत आज की यह कार्यक्रम इस बात का भारत सरकार का और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कितने कमिटेड हैं. और भारत सरकार का यह कमिटमेंट दुनिया में पहली बार किसी संस्थागत तरीके से किसी राष्ट्र ने योकोहामा कॉन्फ्रेंस जो कि 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी, उसके पश्चात अगर किसी देश ने एक राष्ट्रव्यापी संस्थान नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट किसी ने सर्वप्रथम योकोहामा कॉन्फ्रेंस की लर्निंग से लिया था तो भारत था. और ये NIDM की जो जड़ें हैं वो उसी नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में है. तो मैं आज आपके सामने बहुत ही गर्व के साथ में खड़ा होता हूं कि मैं ऐसी संस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो कि दुनिया का सबसे पुराना उदाहरण है. और हम ग्लोबल लेवल पे जब देखते हैं कि 2015 में चाहे वो पेरिस अकॉर्ड हो, चाहे वो सेंडाई फ्रेमवर्क हो, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की गई और बड़े सारे राष्ट्रों ने इस बात को समझा कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए आपदा खतरों को निपटने के लिए हमें और ज्यादा व्यापक रूप से हमें जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा, उनको रिसोर्सेज देने होंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए ये देश, the countries which have done the least crime to the environment are the ones which are paying the highest cost in terms of the increasing intensity and the losses to disaster. And therefore, it is very important that this forum also deliberates that the failure of the West in terms of funding and their meeting the commitments made at the Paris Accord have to be now, we have to come that the South-South cooperation, the global cooperation at the South-South has to be
increased and intensified to see that we are able to meet the challenges of climate change and increasing intensity and frequency of disasters. हमें DRR की मेन स्ट्रीमिंग की जो प्रधानमंत्री, the Indian Prime Minister has given the 10-point agenda, which goes, I call it Sendai Plus, that, and in that context, I think we have to do the mainstreaming of the disaster risk reduction and this knowledge networking which is created today. I'll be very happy that NIDM will help the state government of Uttarakhand to see that the action points emerging out of this conference are taken forward. मैं अपनी बात पूरी करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि 2022 में NIDM की पहल पर इसी राज्य में उत्तराखंड में आपकी एकेडमी में हमने एक सारे हिमालय के राज्यों के साथ में एक समीक्षा की थी और उस समीक्षा में ये उभर कर आया था कि हिमालय के राज्यों की जो समस्याएं बड़ी यूनिक है और उसके लिए एक हिमालयन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का सेंटर होना चाहिए जो कि सारे शोध को और सारी कैपेसिटी को एक जगह लेके आए और उसके लिए एक प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गया था कि अगर भूमि का आवंटन होता है तो भारत सरकार उसमें आगे आकर उसमें एक संस्थान NIDM की एक शाखा हम जो कि हिमालयन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर केंद्रित हो उसका दिया था। उसके बारे में हम राज्य सरकार से अगर जल्दी कोई फैसला आता है तो हमें प्रसन्नता होगी और हम राज्य सरकार के हाथ मजबूत करना चाहेंगे। अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए ये कुछ आपकी अनुमति के साथ में अपनी 2 काव्य पंक्तियों के साथ में अपनी बात को संपन्न करूंगा कि वेदना में कह रही है हिम शिखर की वादियां, वेदना में कह रही है हिम शिखर की वादियां, पर्वतों की पीर का उपचार होना चाहिए। आपदा को पालना या आपदा को टालना, फैसला यह आज आकार लेना चाहिए। धन्यवाद। Thank you so very much, sir, and we are quite excited that we are going to have much more than this in the plenary session from your side. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, now this is my duty to invite Ms. Radha Rathudi, IAS Additional Chief Secretary, Home and Secretariat Administration, Government of Uttarakhand, a lady par excellence, an all-rounder, a person who is known for her integrity, sincerity, and toughness for the job. Ma'am, we welcome you on behalf of the organizing committee. Thank you. आज इस विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी, मुख्य सचिव कमल घनशाला जी, डॉक्टर महंतेश, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, श्री राजेंद्र रत्नू जी, श्री शोम्बी शाह, दुर्गेश पंत जी, कमल घनशाला जी, आई थिंक आनंद बाबू जी, आप सबका और यहाँ इस सारस्वत सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ। बहुत सारे वाइस चांसलर्स हम लोगों के हैं, बहुत ही विद्वान यहाँ पे गैदरिंग है और आप सबके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है, इस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, इनोवेशन जो आपने मोटो दिया है, इसका यहाँ पर विचार विमर्श होगा 4 दिन तक और निश्चित रूप से जो देहरादून डिक्लेरेशन होगा ये बहुत दूर जाएगा हम लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट में एक नई दिशा दिखाने के लिए। अभी जो डॉक्टर महंतेश ने कहा इंक्लूसिवनेस की बात, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और दुर्गेश पंत जी का और सभी ऑर्गेनाइजर्स का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस कॉन्फ्रेंस को इतना इंक्लूसिव बनाया। और इंक्लूसिवनेस में जो दूसरा बिंदु आता है वो है महिलाओं और बच्चों पे आपदा, कोई भी आपदा आती है या क्लाइमेट चेंज होती है तो उसका महिलाओं और बच्चों पे क्या प्रभाव होता है। तो मैं चाहूँगी कि इस कॉन्फ्रेंस में आप इस पे भी कुछ विचार करेंगे और कुछ आपके रिकमेंडेशंस आएंगे, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है तो जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है
उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है उस आपदा का या डिजास्टर का या क्लाइमेट चेंज के जो दुष्परिणाम है उनका प्रभाव अंतिम व्यक्ति पे सबसे अधिक होता है। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि उत्तराखंड क्योंकि एक पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ के जो पर्वतीय अंचल है वहाँ पे पूरा जो बीड़ा संभाला हुआ है, जो आर्थिकी संभाली हुई है, वो वहाँ की महिलाओं ने संभाली हुई है। तो कोई भी अगर डिजास्टर आता है या कोई एक्सीडेंट होता है, कोई लैंडस्लाइड आती है, या जैसे अभी ये टनल में हमारे श्रमिक भाई फंसे हुए हैं, तो इन सब का इम्पैक्ट उनके परिवार वालों पे, उनकी महिलाओं पे बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा अनुरोध है आयोजकों से कि इस विषय पे भी यहाँ आप विचार विमर्श करेंगे। और मैं यहाँ पर सभी आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पिछले 2-3 हफ्तों में आप लोगों ने कितनी कठिन परिस्थितियों में ये पूरा आयोजन किया है। विशेष रूप से इसमें दुर्गेश पंत जी, घनशाला जी, सचिव आपदा प्रबंधन नेगी जी, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात उसमें लगे रहे और आपने इतना अच्छा आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतने सारे देश के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो ये एक कोऑर्डिनेशन में भी एक केस स्टडी हो सकती है कि आपने कैसे इस सेमिनार को आयोजित किया। और आप सबको बहुत बहुत बधाई और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका जो एक मूल मंत्र है इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, कैसे हम लोग संतुलित तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे और इकोलॉजी को भी सुरक्षित रखेंगे, अनिल जोशी जी ने भी उस पर प्रकाश डाला। और यही हम लोगों की थीम है जो इन्वेस्टर समिट आने वाला है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उत्तराखंड को मिलेगा 8 दिसंबर को। इन्वेस्टर समिट की भी जो थीम है वो पीस टू प्रॉस्पेरिटी है, तो वो भी इकोनॉमी और इकोलॉजी को जोड़ते हुए, अगर आपदा नहीं आएगी तो पीस रहेगी, शांति रहेगी, और शांति रहेगी तो प्रगति होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं पंत जी को और सभी आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मुझे मंच पे बैठा के महिलाओं को एक प्रतिनिधित्व दिया, वो भी एक इंक्लूसिवनेस है, तो आपने महिलाओं को इंक्लूड किया, उसके लिए धन्यवाद। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस वर्कशॉप, इस सेमिनार के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे और हम लोगों को क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में बहुत सहयोगी होंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। Thank you, ma'am. You are not only the representative, actually you are the role model for everyone sitting out here in the hall, and the way you have been leading the administrative setup of the state, it is mirror to invite Dr. S.S. Sandhu IAS, the Honorable Chief Secretary of the state, for his brief address. A man known for his administrative capabilities, a man leading from the front at almost every level of the administrative setup of the state. Sir, we welcome you on behalf of the organizers. Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkarsinghdhami ji, Admiral D.K. Joshi ji, Honorable Lieutenant Governor of Andaman, dignitaries on the dais, delegates from abroad and India, ladies and gentlemen. First of all, on behalf of the state government, I welcome you all to this beautiful state and beautiful city of Dehradun. And this is one of the most ideal season to visit Uttarakhand and Dehradun. I hope you'll be able to enjoy your stay here. This is a very, very pertinent topic for Uttarakhand, as we are all aware. That justifies the hosting of this conference in this town and in this state. Whatever I wanted to say, many speakers before me, they have already mentioned it. For the sake of time and to avoid the reputation, I will not be saying all that. I'll just be posing a couple of food for thought. This is a very frequent question that the so-called development projects, they bring disaster. When you visit different parts of Himalayas, not only in Uttarakhand, or other hills also in other countries, wherever the projects are,
sometimes landslides and other small or big disasters, they do happen. And when I travel in Uttarakhand, I see the roads which were built, say, 2-3 decades ago, now they have become so natural, there is hardly any landslide near them. Exceptions can be there. And when this all-weather road project started in Uttarakhand, there was some criticism because whenever you make a new road, it's bound to invite some landslides. It's there. But with proper treatment, with proper mitigations, over a period of time, there are treatments available, and we have been doing it, and we are doing it, and we will be successful. But it's wrong to say that only these development projects will bring about landslides. When I travel in Uttarakhand in the hills on a helicopter, which most of you, if you have done that, must have seen, there are places where there's no habitation nearby, there's no project nearby, even then there are landslides. So, my dear friends, as long as this nature has made gravity, which pulls the stone or whatever is there, because we are in the hills, there is a slope, and the gravity, nature has provided gravity, and there's a job of the gravity to pull everything down. And whenever the excessive rain happens, the soil which binds in the lower Himalayas and middle Himalayas, all our mountains, you know, they are fragile, they are stones bound by loose soil. Whenever excessive rain happens, the soil is washed away, the stones start rolling down, whether there is a project or no project, landslide does happen. Now this is a challenge, and we can't wish it away as long as the gravity is there. So we have to be realistic, and as far as this development is concerned, I am aware of a village about a decade back I visited in this state. This village was in a forest area, and we were not getting clearance to make a road. And you know, once some people came from that village and told me that the previous night there was a lady who, you know, went into labor. She, you know, was about to deliver a baby, and there was no road for 10 kilometers. The 4 people put her on the cart, carried her for 10 kilometers. Then they reached the road head, and from there, some local jeep carried that lady to the hospital. So, environment and all this ecology is very, very important. That's why our CM Saab keeps saying we have to maintain a balance of ecology and development, but we can't. If you go to that village, visit that village, then you realize how important this basic infrastructure is. So we are all aware, so we have to strike a balance. Now this is a challenge before all of us, and we would like you to discuss this issue, how to strike this balance. There cannot be a general formula, there cannot be a general prescription. It will vary from situation to situation, from village to village, from project to project. Second thing, I will not take much time. Second thing which I want to throw before you, and question before the international delegates, if they have some experience, we would like to get that benefit, this state. 72% of the area of this state is under forest, which is really rare. Now, all of us are talking that this frequency of disaster is increasing because of the climate change. And everyone also knows, sitting here, that deforestation is one of the most important reasons for climate change. Which means this state is contributing by carrying 72% of the area as forest. Not only this state, it's benefiting the state, it's helping to lessen the speed of climate change. But is there a way, there's a cost to carry such a huge forest? You know, if there is a state, there is no forest, they can make a road immediately, they don't have to cut the forest, they don't have to pay NPV and all those compensatory afforestation, etc. There's a huge cost to the state to maintain 72% of its area as a forest, and the whole world is benefited. Is there any way? Or is there any example in any other part of the world where there is a system of compensation because the state is contributing towards lessening the speed of climate change? This is the only question I wanted to throw before you. If we have some answer or some example, I again welcome you. I hope your stay is comfortable, and
I would wish you that after this conference is over, you extend your stay, enjoy this beautiful stay. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this clear. Ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. Shambi Shah, the UN Resident Coordinator for India, New Delhi. He is the representative of UN Secretary General, and he carries the highest ranking of the UN officials based in the country. Thank you so much, Honorable Chief Minister, Uttarakhand, Sri Pushkarsinghdhami, Honorable Lieutenant Governor Andaman and Nicobar, Admiral D.K. Joshi, Honorable Chief Secretary of Government of Uttarakhand, Dr. Sandhu, all of the dignitaries on the dais, and all of you here in the room representing so many different countries from across the world and so many different entities key to this integrated response to disaster risk, and especially to the first responders here in the hall and those who I had the opportunity to see in the exhibition space. Welcome. It's a great honor. मुझे देहरादून में पहली बार आकर बहुत खुशी हुई. It's a great honor to be here in this beautiful, utterly beautiful Uttarakhand and Dehradun on behalf of the United Nations in India and on behalf of the UN Secretary General Antonio Guterres. Great honor to join you for this 6th World Congress on Disaster Management, which has, I believe we can all agree, emerged as a leading conference for experts and practitioners in the field of disaster risk reduction. I'm delighted that we're able to come together as a result of the efforts of the government of Uttarakhand, the Disaster Management Initiatives and Convergence Society, Uttarakhand State Disaster Management Authority, Uttarakhand State Council for Science and Technology, as well as the other colleagues. I'm very pleased the United Nations agencies have also been able to support this gathering. Dear colleagues, it is no secret that the world stands at a critical juncture. Risks are being created in our today faster than they are being reduced. This is a global affliction. No community anywhere is immune. And I would like to join the previous speakers in sparing our thoughts for those who are affected, including the workers in the tunnel, and to recognize the incredible efforts of the Chief Minister and of the first responders seeking to secure their safety at any moment. Ladies and gentlemen, the world is trying to recover from the aftershocks of the COVID pandemic. Yet, at the same time, we face a polycrisis of war, of debt, of food and insecurity, overwhelming our collective ability to cope. At the Global SDG Summit in New York just a couple of months ago, the world came together for a stocktake, and the news was desperate. The SDG global goals, only 15% are on track. Fully, almost 1/3 have come to a halt or are actually in reverse. We are living in a world in which the only certainty is uncertainty. Record-breaking heat, wildfires, flooding, extreme weather are already devastating lives across the planet. This is the new reality, the triple planetary crisis, which is our greatest existential threat. According to FAO and WMO, disasters are occurring 300% more often today than they were just 3 decades ago. The World Bank estimates
that natural catastrophes have caused losses in excess of $228 billion in the past 3 years alone. Here in India, of course, given the geographic realities, we know that it is one of the most disaster-prone countries exposed to hazards, feeling this reality acutely, from devastating floods to unseasonal monsoon rains that continue to change. And therefore, the United Nations in India is very proud and pleased to work closely with the government of India under government leadership at center and at state level to increase institutional and community resilience, helping to integrate climate change into adaptation and mitigation and DRR measures as a part of core development policies. The cruelty, as already mentioned, is that natural hazards and climate change are affecting those who contributed to it the most, who contributed to it the least. They are being affected the most. The United Nations estimates that over 90% of all disaster-related deaths occur in developing economies. Over 2.5 million lives have been lost since 1980. And the majority of the 50 countries most vulnerable to climate change are also suffering the most from debt burdens, forcing them to choose between health, education, and resilience. Disasters deepen gender inequalities, as mentioned, with women suffering from higher mortality in natural disasters and facing more the effects, the impacts on the primary economy and on agriculture. Yet, colleagues across the world, there is also good news and reasons for optimism. First, we have the solutions at hand. The SDGs remain our only blueprint for peace and prosperity, together with the Paris commitments to keep the 1.5-degree dream alive. And we have a global framework for reducing disaster risks, the Sendai framework for DRR. While UN DRR and the midterm review of this framework in May found that progress is not where it needs to be, an ambitious political declaration committed countries to accelerating resilience building with renewed urgency. 125 countries now have national strategies for disaster risk reduction. Yet half of those countries still do not have multi-hazard early warning systems. And here, India's stewardship of disaster risk reduction is a bright spot that can be an inspiration for others, for many in this room. India's early warning system for cyclones, for example, covers the entire coastline, an extensive coastline, and has helped reduce cyclone-related mortality by 90% over the last 15 years. Heat wave action plans at local levels have reduced deaths resulting from heat waves by over 90%. The recent zero death toll of Cyclone Biparjoy earlier this summer demonstrates what can be achieved through effective preparedness, early warning, and response systems. India's own midterm progress review against the Sendai framework has identified important trends, opportunities, and challenges that can be very relevant for the global level. One of the most cost-effective risk reduction methods, indeed, is the early warning system. And this early warning systems for all initiative, spearheaded by the United Nations with India's support, helps bring the message that just 24-hour warning of a coming storm, for example, can reduce damage caused by over 1/3. India, which has long been a voice for the Global South and a provider of assistance through South-South cooperation, brought us, for example, just about to conclude the G20 summit and presidency, leading to a consensus, SDG-focused New Delhi Leaders Declaration. So aligned with the SDGs, I like to call it an SDG 20. And now I'd like to recognize all of those here in the room who were instrumental
in launching the G20 Working Group on Disaster Risk Reduction for the first time within the G20, bringing DRR to the forefront of the G20 process, which will be taken forward by Brazil, and after that South Africa and onwards. The 5 priorities that India highlighted at the G20 were the need for universal coverage of early warning systems, disaster and climate resilient infrastructure, national financing frameworks for DRR, post-disaster recovery, reconstruction, and rehabilitation, focusing on building back better, nature-based solutions, and ecosystem-based approaches for DRR. All of this is an important step forward to achieving rapid progress. So to close, dear colleagues, I would like to reiterate that, as has been mentioned, disaster risk reduction is an integral part of development, an integral part of just climate transitions and climate action and the 2030 agenda. We need climate justice. We need disaster resilient infrastructure for all. So as we look ahead in the coming few days from now to COP28, we have great hope for important decisions on funding the Loss and Damage Fund that will help those countries who have contributed the least build their resilience in the face of climate change. And we look forward to the Summit of the Future next year to ensure that the multilateral system created in the aftermath of the Second World War is fit for purpose for today's world. I thank you, all of you here, for your dedication, and I reassure you of the United Nations commitment to be your close partner in this journey. The resident coordinators, the UN country teams in your countries, when you go back home, please reach out. They are dedicated to being your partner in this journey. I look forward to the rest of the conversations today. Aaj ki charcha achi rahe. Bahut bahut dhanyawad. थैंक यू सर। हम आपके ऐसे सूक्ष्म उद्बोधन हेतु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। Ladies and gentlemen, now we have amongst us Admiral Devendra Kumar Joshi, PVSM, AVSM, YSM, BSM, Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands, and the Vice Chairman of Islands Development Authority of India. Sir, it is a rare honor for us to have you amongst us as a guest of honor. Joshi is a highly decorated officer, and he is associated with Uttarakhand War Memorial Trust. Ladies and gentlemen, put your hands together, because Sir has contributed all his current and future annuities for gallantry awards and decorations towards this Trust of Uttarakhand War Memorial in July 2020. Sir, we welcome you on behalf of the organization. Honorable Chief Minister, Shri pushkarsinghdhami ji, CS Dr. Sandhu, Dr. Shombi Shah, UN Resident Coordinator in India, additional CS, other distinguished delegates seated on the dais, academics, scholars, subject matter experts, distinguished delegates from what we are told is more than 50 friendly foreign countries, ladies and gentlemen. First and foremost, I wish to express my solidarity towards the workers trapped in the tunnel collapse in Uttarkashi. I am confident that rescue efforts by Uttarakhand administration under the able guidance of Honorable Chief Minister will be successful, and that very soon we'll hear some good news. Uttarakhand and Andaman and Nicobar Islands are geographical extremities of our very vast country, but both are frequently impacted by various disaster situations. Uttarakhand has had many tragic occurrences, and ANN Islands too bore the brunt of the tsunami in 2004. Just during the last 1 year, we experienced 23 tremors and earthquakes
of less than 5 magnitude on the Richter scale. In fact, 2 of them just yesterday morning. And 9 earthquakes or tremors of more than 5 magnitude on the Richter scale. Additionally, we've also experienced in recent years 18 cyclones under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister. ANN administration is committed for development of disaster-resistant islands. Dedicated efforts are going on with holistic, multi-hazards and technology-driven strategies along with emergency operation centers. We are sensitive to unpredictable weather situations and buffer stocks of essential foods and medicines are maintained. In the brief time available, I'll just make a passing reference of the ongoing disaster management measures, but would like to devote greater time to some global best practices that we can incorporate in our context and which I hope that the following sessions in the plenary and the technical sessions over the next 2 to 3 days will address. With integration of Sachet and Indian Disaster Resource Network portal, Pan-India number 112 based emergency response support system, Sendai framework schemes, integrated command and control centers are already being progressed under the smart city projects. Mausam and Dhami apps, police marine force vessels, trained disaster response teams, and Jan Bhagidari disaster management ecosystems are also active. I had tasked a team of our officers to go through what might be the best emerging global practices in disaster management, which have not yet fully been incorporated in the Indian context, and I would like to make a brief mention of them. Planning. The development of sustainable urban planning, resilient habitats, and adaptable infrastructure is crucial from the planning perspective of an effective disaster management system. Creation of digital platforms with technologies like red relief image mapping for 3D visualization of topography and virtual emergency operation centers have potential utility for real-time data integration and its analysis from various sources. Keeping in mind public facilities like hospitals and schools, a community disaster risk map can be created through integration of community assessment units, cartography, predictive analysis, GIS mapping, and building assessments. From the economic perspective, disaster risk financing strategy is of utmost importance. In this context, disaster insurance may be contemplated in urgent residential areas, considering that many a time financial losses from natural disaster outweigh the funding available from NDRF and SDRF. Early alerts and warning systems. An automated earthquake early warning system, seismometers and sensor networks can detect initial tremors and seismic energy, thereby broadcasting alerts before the stronger shock waves arrive. These can be complemented by consequent measures like slowing down of trains, shutting down of critical factory operations so as to reduce casualties and contain and minimize damages. The integration of indigenous knowledge of local communities with disaster management is equally important. This grassroots approach is essential for natural disasters, especially in coastal and hilly areas. For flood forecasting, warnings can be issued timely through analysis of precipitation data, weather radars, and flood modeling for accurate and timely hazard assessment. In high-risk areas prone to landslides, timely alerts can be triggered through geotechnical monitoring, satellite data, sensors, automated analysis of
soil monitoring, rainfall data, thus facilitating timely evacuation of populated areas. Technical disaster-proof infrastructure measures such as base isolators, shock absorbers, and damping systems that absorb and dissipate seismic energy can be adopted for earthquake-resistant building construction. With creation of green roofs, permeable pavements, retention ponds, and green spaces, urban heat islands effect can be reduced. Similarly, flooding risks can be minimized by creation of overflow areas and bypass channels, thus giving more space to rivers during heavy rainfalls and higher water levels. Smart technology like Internet of Things, data analytics, and artificial intelligence-powered disaster response platforms, real-time monitoring systems, reliable, secure, and decentralized data exchange platforms during disaster for government agencies and community management can be a game changer for disaster risk reduction. Drones equipped with cameras, GIS technology, and sensors can be crucial for real-time data collection for targeted intervention in emergency situations. Virtual reality simulations can be effective in training and awareness among general public and emergency responders. Technologies like Relay by smartphone, which facilitates rescue requests being shared between smartphones in disaster-affected areas, and rescue-related data updation on cloud in case of internet availability, have potential utility in disaster situations. I would like to suggest that by contemplating merit of their replicability in our context, we can further strengthen our disaster management regime towards realizing the Viksit Bharat vision of our Honorable Prime Minister. Once again, I extend heartfelt thanks to the Honorable Chief Minister for providing me this opportunity to participate in this esteemed event. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your attention. Jai Hind. Thank you so very much, sir, for this brief but very, very precise scientific and technical insight on managing disasters. I hope India's disaster management paradigm. It is based on his experiences of the Honorable Prime Minister of the country. आप जानते हैं कि वो कितना संजीदा इस विषय को मानते हैं और व्यक्तिगत तौर पर हमेशा हर जगह या तो पहुंचने का प्रयास करते हैं या वो उसको मॉनिटर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग करतल ध्वनि से उनके इस अथक प्रयास का स्वागत करें और इस विमोचन में उनका साथ दें। काट लो क्लोज जाऊं क्लोज Just for everybody's information, this book will be provided by UCOS Council of Science and Technology to all the delegates. 1,000 copies are already there. You will be receiving it from the reception. धन्यवाद सर। देवियों सज्जनों, अब समय है कि हम अपने राज्य के ऊर्जावान और भारतीय राजनीतिक साहित्य आकाश और राजनीतिक आकाश के दीप्यमान नक्षत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्करसिंघधामी जी का उद्बोधन सुनेंगे। सर, हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला।
हम आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिवादन और स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के इस उद्घाटन सत्र में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे अतिथि और जिन्होंने भारत की सेना में अनेकों अनेकों पदों पर काम किया, जिनका अभी जब यहाँ से उद्घोषक जी कह रहे थे PBSM, ABSM और लगभग 40 साल से भी ज़्यादा की भारतीय सेवा की, भारत की सेना की सेवा की, जैसे आज के हमारे अतिथि एडमिरल DK जोशी जी, माननीय उपराज्यपाल अंडमान और निकोबार, मैं एक बार सभी की ओर से आपका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सोमबी शार्प जी, भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, इन्होंने कहा कि पहली बार देहरादून आकर मुझे अच्छा लग रहा है। आप सब लोगों को भी अच्छा लगा होगा आपको देखकर। सोमबी शार्प जी, हमारी मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, कार्यकारी निदेशक NIDM श्री राजेंद्र रत्नू जी, डॉक्टर G महंतेश, संस्थापक समर्थनम इंटरनेशनल बेंगलुरु, और हम सबके बीच में लगातार अनेकों क्षेत्रों में जिनका काम पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्रों में लगातार इन्होंने भारत की इकोनॉमिक कैपिटल से इकोलॉजी कैपिटल देहरादून तक साइकिल यात्रा करी, लोगों को जागरूक करने के लिए। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, पद्मश्री पद्म भूषण, डॉक्टर आनंद बाबू जी, संयोजक TMICS, श्री रंजीत कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर हमारे सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड, और आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने पूरा इसके संयोजन का काम किया, जिनके अथक प्रयासों से ये विश्व आपदा का सम्मेलन देहरादून में आयोजित हो रहा है, ऐसे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, और जिनके इस संस्थान में जिन्होंने उनके साथ लगातार अपना सहयोग प्रदान किया, और ये सम्मेलन बहुत शानदार तरीके से आयोजन की ओर बढ़ा। ऐसे हमारे अध्यक्ष ग्राफिक एरा संस्थान प्रोफेसर कमल घनसाला जी, एवं इस आपदा सम्मेलन में पधारे विश्व के अनेक देशों से, जैसा अभी बताया गया कि 50 से भी अधिक देशों से हमारे जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, हमारे प्रतिनिधि आए हैं, साथ में राज्य के भी और देश के भी अनेक संस्थानों से, जो हमारे वाइस चांसलर हैं, अनेक संस्थानों के हेड हैं और प्रतिनिधि आए हैं। साथ में हमारे नवोदित जो वैज्ञानिक हैं, हमारे छात्र एवं छात्राएं, सभी हमारे उत्तराखंड सरकार के, भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो द्रोण नगरी देहरादून में आयोजित होने वाले इस छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में आप सभी का उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आप सबका यहाँ पधारने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इस सम्मेलन में सबसे पहले तो क्योंकि ये उद्घाटन सत्र है और अनेक जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन सबके
विचार यहाँ पर रखे जाने हैं, उनके अनुभव हम सबके समक्ष आएंगे, एक बड़ा चिंतन उनका चलेगा। लेकिन इस अवसर पर मैं विश्व में समय समय पर जो अनेकों प्रकार की आपदाएं और उन आपदाओं के कारण से असमय काल के गाल में समाने वाले सभी दिवंगत आत्माओं को उनकी शांति के लिए भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ और उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही जो अभी एक संकट हमारे समक्ष बना हुआ है और चिलकारा उत्तरकाशी में टनल निर्माण में लगे हुए हमारे 41 श्रमिक भाई अभी अंदर हैं, सकुशल हैं। वैसे उनको सभी प्रकार की जो भोजन से लेकर ऑक्सीजन, पानी इत्यादि की तमाम प्रकार की जो आपूर्ति है वो लगातार हो रही है, सुरक्षित भी हैं और तेजी से उस पर काम भी चल रहा है। तेजी से काम चल रहा है। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने इसके विशेषज्ञ हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और भी संस्थानों के टनल के क्षेत्र में काम करने वाले, वो सारे लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रत्येक दिन उन सब के बारे में कि किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत न हो, सभी सुरक्षित बाहर निकले, टेक्नोलॉजी का ठीक प्रकार से उपयोग हो वहाँ पर, उन सब की लगातार चिंता कर रहे हैं। बल्कि अभी जब हम अंदर आ रहे थे तो सम्मेलन के उद्घाटन से पहले भी उन्होंने अभी यहीं पर जानकारी ली है। तो सभी के लिए लगातार प्रयास भी हो रहा है। और अभी अभी संधू साहब और हम बैठे थे यहाँ पर तो इनके मोबाइल में अपडेट आ रहा था कि 53 मीटर तक सुरंग जो है उसके अंदर पाइप चला गया है। तो अब भगवान की कृपा से सब कुछ अगर बिना किसी रुकावट के चला तो संभवतः बहुत जल्दी हम लोग ब्रेक थ्रू तक पहुंच जाएंगे, उनके पास तक पहुंच जाएंगे। और जो इतने दिनों से एक पूरा सभी के सामने, पूरे राष्ट्र के समक्ष एक ऐसा संकट आया हुआ है, उस संकट से हम सबको निजात मिलेगा। हमारे श्रमिक भाई वापस आएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी जल्दी से जल्दी सकुशल बाहर आए। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज यहाँ विश्व के सभी महाद्वीपों से आए हुए सभी प्रतिनिधि हमारे उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में जहाँ ये सम्मेलन हो रहा है, ये सदियों से मानव जाति को प्रकृति के साथ जो सहज जीवन की जो ये पद्धति है वो ये प्रेरणा देता रहा है। यह प्राचीन काल से शोध, साधना, अध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान की उद्गम स्थली कोई रहा है तो यही राज्य है, यही भूमि है जहाँ पर आज इस पर इतना बड़ा मंथन हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु नानक देव जी, स्वामी विवेकानंद जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक अनेक युग दृष्टाओं की आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक यात्रा में कहीं न कहीं हिमालय और विशेष रूप से उत्तराखंड के दर्शन अवश्य होते हैं। उनकी यात्राओं का हम कभी अवलोकन करेंगे तो हमको निश्चित रूप से हिमालय भी दिखेगा, यहाँ का ग्लेशियर भी दिखेगी, यहाँ की प्रकृति भी दिखेगी। इसलिए आज पूरे विश्व में आपदा प्रबंधन का संदेश प्रसारित करने के लिए हिमालय के मध्य में बसे हुए देवभूमि उत्तराखंड से बेहतर और कौन सा स्थान हो सकता था जहाँ इस प्रकार का आयोजन हो। विश्व की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से आपदाएं लगातार घटित हो रही हैं, ऐसे समय में ये वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन अत्यंत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील हो जाता है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उसकी दृष्टि से ये अत्यंत ही संवेदनशील प्रदेश है। प्रत्येक वर्ष किसी न किसी आपदा का हम सभी को सामना करना पड़ता है, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं बर्फबारी के रूप में, कहीं अतिवृष्टि के रूप में, अनेकों कहीं अत्यधिक बाढ़ के कारण से, पानियों के कारण से हमें अनेक प्रकार से आपदाओं का सामना करना पड़ता है। और उन आपदाओं को गिनेंगे तो इतनी आपदा है। केदारनाथ की त्रासदी अभी हम सब लोगों ने देखी, उत्तरकाशी में जिस प्रकार से वरुणावत पर्वत पर लगातार
वहाँ से भूस्खलन शुरू हुआ था, वह भी हमने देखा। अभी धारचूला में एल धारा है, रहने की आपदा है। पिछले वर्षों में जो अतिवृष्टि के कारण से, इस वर्ष भी हमको अनेक जनपदों में अतिवृष्टि के कारण से लगातार आपदाओं का सामना करना पड़ता रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का एक ही उपाय है, प्रोएक्टिव अप्रोच, जिसके अंतर्गत यह आवश्यक है कि आपदा न्यूनीकरण हेतु पूर्व में तैयारी कर ली जाए। पहले से जो हम तैयारी कर लें तो इन आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन आपदाओं का जो प्रभाव है उसको कम जरूर किया जा सकता है। मेरा मानना है कि ऐसे समय में तमाम प्रकार की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं वो सबकी एकीकृत होनी चाहिए। एक सी प्रतिक्रिया होने से नुकसान और जनहानि दोनों को ही न्यून किया जा सकता है, दोनों को ही कम किया जा सकता है। भूमि में आने वाली आपदाओं से सबक लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हमने राज्य में चिकित्सा सुविधाएं हैं, सशक्त संचार व्यवस्था है, ऑल वेदर रोड हैं, हेलीपोर्ट्स के निर्माण है, शहरी नियोजन जैसे अनेकों कार्यों पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। उसके लिए तैयारियां भी की जा रही है और हम आपदाओं का सामना करने के लिए कहीं न कहीं बेहतर रूप से तैयार हो रहे हैं। भाइयों बहनों, प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन हम बेहतर जो रणनीतियां बनाकर और ये रणनीतियों को लागू करके निश्चित रूप से इनको न्यून कर सकते हैं। और जैसा अभी मेरे से बोलने वाले बहुत सारे वक्ताओं ने बोला, जोशी जी ने बोला, हमारे संधू साहब ने भी बोला, इकोलॉजी और इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बेहतर कोऑर्डिनेशन से प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए एक बेहतर प्रबंध तंत्र हम विकसित कर सकते हैं। एक ऐसा तंत्र बना सकते हैं जो इन सबको समन्वय करे। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसमें पृथ्वी को माता के समान पूजा गया है। और मैं समझता हूं कि सही मायनों में इसी में आपदा प्रबंधन की मूल धारणा निहित है, अगर हम ठीक से करेंगे तो। क्योंकि मेरा मानना है यदि हम पृथ्वी समेत सभी जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपभोग न करके उनका अगर उपयोग करेंगे तो सही अर्थों में प्राकृतिक संरक्षण में हम इसके संवर्धन में, इसके संरक्षण में, आपदा के न्यूनीकरण में हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस सम्मेलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रतिरोध की चुनौतियों पर चर्चा करना एवं उनका समाधान निकालना। और निश्चित रूप से इतने सारे जब विशेषज्ञ आए हैं, इतने सारे लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, तो हम उस दिशा में अवश्य सफल होंगे। इसके अतिरिक्त सम्मेलन का जो उद्देश्य है, राज्य के अंदर प्रत्येक वर्ष जो मैंने पहले कहा कि आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तो आपदा प्रतिरोधन समाधानों के रूप में, केंद्र के रूप में ही विकसित करना। जैसा कि हमारे राजेंद्र रत्न जी ने कहा कि केंद्र की तरफ से हमारे यहाँ इस प्रकार का संस्थान खोले जाने के लिए वहाँ से प्रस्ताव है। हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं बीच में कुछ आदान प्रदान ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसको तत्काल आगे बढ़ाएं, जिससे कि जहाँ सबसे ज़्यादा आपदा आती है, हर वर्ष जहाँ आपदाओं का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर बड़ा संस्थान आपदा प्रबंधन का होना चाहिए। और मुझे बताया गया है कि इस आयोजन के माध्यम से विश्व में प्रकृति के प्रति मानव समाज के सामूहिक दायित्वों और आपदा प्रबंधन में उसके महत्व को उजागर करते हुए देहरादून डिक्लेरेशन के रूप में भी एक विशेष संदेश देने का काम ये सम्मेलन करेगा। तो निश्चित रूप से यह डिक्लेरेशन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा और मेरा ऐसा मानना है और मुझे विश्वास भी है कि इससे पूरे पर्वतीय क्षेत्र सहित सारे विश्व के लिए, ये आगे आने वाले समय के लिए
कहीं न कहीं आपदा न्यूनीकरण और आपदा के क्षेत्र में बेहतर समन्वय और बेहतर काम करने के लिए कारगर होगा। इसमें मुझे बताया है कि 4 दिवसीय सम्मेलन में 60 से भी अधिक जो विशेष टेक्निकल सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विश्व भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में विषय विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन, आपदा से संबंधित ज्वलन चुनौतियों, उनके समाधानों पर विचार मंथन करेंगे। मैं उन सबको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस आयोजन में हमारे इस आयोजन को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य के साथ साथ देश भर के भी अनेक संस्थानों ने इसमें अपना योगदान दिया है। इसमें IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, वाडिया इंस्टीट्यूट, आसाम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसरो, IIP आदि प्रतिष्ठित संस्थानों के समन्वय से आपदा प्रबंधन पर विभिन्न प्री इवेंटों का भी, इससे पहले प्री इवेंट भी आयोजन किए गए हैं और अनेकों संस्थानों ने आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता छात्रों तक और नवोदय और नवोदित लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है। यह अभूतपूर्व है कि पूरे राज्य और देश भर में इतने बड़े स्तर पर विस्तृत कार्यक्रम किए गए। इसके लिए मैं पूरी जो टीम है, इसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, WCDM वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और विशेष रूप से हमारे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे देश के अंदर G20 का आयोजन हुआ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की अध्यक्षता में। ये पूरा बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ जिसमें पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति और भारत का सामर्थ्य देश के कोने कोने में जाकर देखा। पहले भी ऐसे आयोजन होते थे, लेकिन ये आयोजन इतने बृहद स्तर पर नहीं होते थे। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई आयोजन होता था तो वो कुछ ही शहरों में सिमट कर रह जाया करता था। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उनके विजन के कारण से दुनिया के लोगों ने भारत के 200 से भी अधिक स्थानों को देखा और भारत की शक्ति सामर्थ्य के ब्रांड एम्बेसडर बनकर वो अपने अपने देशों को गए, दुनिया के अंदर गए। वहीं उत्तराखंड के अंदर भी 3 G20 की समिट आयोजित की गई और तीनों ही बहुत सफलता से संपन्न हुई। हमने अन्य उपलब्धियों के साथ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को जो कि G20 के विवर्ष में सम्मिलित किया गया था, G20 की अध्यक्षता की विशेष उपलब्धि रही। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए विशेष रूप से उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन पर एक विशेष सम्मेलन का विचार जो शुरुआत में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी छोटी सी, उसमें 2 वर्ष पूर्व जब हम बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, हमने इसकी शुरुआत की है और अनेक ऐसी हमने बोधिसत्व श्रृंखलाएं चलाई हैं जिसमें 2 दर्जन से भी ज़्यादा श्रृंखला हमारी आयोजित की जा चुकी है। उसी में इसका विचार आया था कि आपदा प्रबंधन पर, और मुझे आज बेहद प्रसन्नता है कि उस विचार का प्रस्फुटन जो आज यहाँ इस विराट विश्व सम्मेलन के रूप में दिखाई दे रहा है, इसमें आप सब लोग, पूरी दुनिया के लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। 8 और 9 दिसंबर को हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसमें देश विदेश के औद्योगिक समूह निवेशकों द्वारा उत्तराखंड में निवेश को गति देने के लिए प्रतिभाग किया जाएगा और जिसमें अभी तक राज्य के लिहाज से एक मैं कहूँगा कि सम्मानजनक और कहीं ना कहीं हमको प्रोत्साहित करने वाली जो निवेशकों के साथ हमारा करार हुआ है, अभी सम्मेलन से पहले ही 2 लाख करोड़ का हमारा करार हो चुका है और निश्चित रूप से इस सम्मेलन से ठीक पहले आपदा प्रबंधन का एक वैश्विक सम्मेलन सुरक्षित निवेश सुदृढ़ उत्तराखंड का संदेश देश विदेश में प्रसारित होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी जो कि आपदा प्रबंधन का काम भी पूरे देश का देखते हैं, मैं उनका भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन के प्रति उनके संकल्प ने हमारा भी
उत्साहवर्धन किया, अपना संदेश भी दिया और उनकी पुस्तक जो लिखी गई है वह भी हम सबके समक्ष आई है, रेजिलेंट इंडिया, जिसमें विस्तार से आपदा के संबंध में किस त्वरित गति से भारत तैयार हुआ है, भारत की तकनीकी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, दिखाया गया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस विशिष्ट पुस्तक का विमोचन का भी हमको इस सम्मेलन में अवसर प्रदान किया। मैं आशा करता हूं कि इस सम्मेलन के माध्यम से जो हमारे समेकित विकास लक्ष्यों के साथ साथ आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जनित जो चुनौतियां हैं उसमें हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सम्मेलन हमारे उन लक्ष्यों को जो हमने निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। मुझे यह भी विश्वास है कि इस सम्मेलन में जो चिंतन और मंथन होगा, इससे जो अमृत निकलेगा वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमालय राज्यों के लिए और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन सभी के लिए लाभदायक होगा, आने वाले समय में सहायक सिद्ध होगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के लिए भूमि उपलब्ध होगी और केंद्र से इस संस्थान को खोलने के लिए जो भी अपेक्षा केंद्र की होगी उसमें हमारा राज्य काम करेगा। साथ ही दिव्यांग और महिलाओं के लिए आपदा प्रबंधन के लिए हम विशेष रूप से प्रावधान करेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थानों में आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम और जहाँ पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा और साथ ही कार्यशालाओं का भी आयोजन करके निश्चित रूप से इस प्रकार की चुनौतियों को सामना करने के लिए हम अपने नवोदित और उदयमान आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी तैयार करेंगे। मैं पुनः इस सम्मेलन में सहयोग कर रहे समस्त प्रतिभागियों का, विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का, शोधकर्ताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, मीडिया बंधुओं का, छात्र छात्राओं का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं तथा इस सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों और सहयोगी संस्थानों को भी शुभकामनाएं देता हूं और आए हुए हमारे सभी डेलीगेट्स का एक बार मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद देवी और सज्जनों, आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री का यह ओजस्वी उद्बोधन सुना। माननीय महोदय, आपके उद्बोधन से हम अनुग्रहित हैं और हम आपको दिखाए गए रास्ते चलने का प्रयास करेंगे। Now, according to the Indian tradition, we would like to present, as a gesture of honor, appreciation, and welcome, we would like to present memento to all. इधर खड़े क्या?
रोज फोन आ रहा है उसका। क्या हाल है सर? आज कल रात को आया, मेरे को इसी के लिए भेजा गया यहाँ पे आज आ रहे हैं ना ये वहीं जा रहे हैं ना? वहीं जा रहे हैं ना? अब ये वहीं जाएंगे। हाँ, आज निकल जाएंगे। फैमिली को अलर्ट कर दिया है, पूरा एरिया साफ कर दिया। सबसे पहले मैं और सबसे वेट में नहीं जा रहा। हाँ। 10-10 किलोमीटर हम तो टनल के अंदर भी घुस गए, अब तो मारामारी हो रही है। सीपेज हो रहा है, पर वो इस तरह से हो रहा है कि भगवान की देखा आपने? हाँ देखा देखा। तुम्हें तो करना चाहिए था उसमें। हाँ हो गया, मैंने फटाफट डाल दिया था सर ने। माइक नहीं तो किसी को पकड़ा देना माइक पकड़ाऊंगी तो नीचे लगा देंगे, मैं लगा दूंगी। हाँ नहीं तो साइड से चले जाना, लगा दूंगी। पॉडियम में जा पता सही है। मतलब ये वाला ऊपर है ना, नीचे वाला तभी आवाज आएगी ना। ऑन कर दो। इधर ले आओ, इधर इधर और आगे आगे पीछे नहीं भैया, यहाँ पे
थोड़ा पीछे जा जाएंगे, थोड़ा पीछे जा जाओ, लॉन्ग बन जाएगा। मेरा ही मत रखिए सब। अरे माइक क्या वो लगा देते ना, ये नहीं आएगा। इसके ऊपर माइक रखो, कोई नहीं आ जाएगा, ग्राफिक एरिया आ जाएगा इसमें, आ जाएगा ना माइक, ऑडियो भी सही आ जाएगा ना। करने दो, वही करने दो, करने दो सर, करने दो, करने दो, हम तो कर लेंगे सर, वो करने दो। रख दूंगा, मैं रख दूंगा। आपका फिट है ना यहाँ से? हाँ मेरा फिट है ना, मैं नहीं लाऊंगा, बस मेरे को एक बार बन गया, मैं यहाँ कर